21वीं सदी की दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं वो पूरी तरह अलग है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी व्यवस्थाएं The systems and institutions created after the Second World War are crumbling. After the COVID pandemic, when we should have moved towards a new world order, the world was caught up with other things. In these circumstances, the best motto the world can follow today to move forward is democracy first, humanity first. The mantra democracy first teaches us that we must take everyone along, and in doing so become a partner in everyone's development. The humanity first motto guides our decisions. निर्णयों का आधार बनाते When हैं we make तो नतीजे भी मानवता का हित करने वाले ही होते हैं। साथियों, हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज इतनी मजबूत है कि विकास के रास्ते पर चलते हुए come हर a pillar of support, enabling us to face any ups and downs on our path to development. To build an inclusive society, there is no better system than democracy. Whatever may be the belief or creed of citizens, whatever may be their background, democracy guarantees for all citizens protection of their rights and a bright future. And both our countries have together shown that democracy is not just a law, it is not just a system. We have shown that democracy is in our DNA. It is reflected in our vision and in our actions. Friends, our human-centric approach teaches us that every country is equally important and that the citizens of each country are equally important. Therefore, when it was necessary to unite the world, India, during its G20 presidency, presented the One Earth, One Family, One Future mantra. When the entire world faced a very difficult time of COVID-19, when entire humanity went through a difficult time, India gave the message of one earth, one health. When we had to mobilize the efforts of all countries to fight climate-related challenges, India presented its vision, one world, one sun, one grid. When collective efforts were necessary to save the world from natural disasters, India launched CDRI, that is, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure. When the world had to create a vast network of pro-planet people, India started a global movement, Mission Life, that is lifestyle for environment. Friends, following this very principle of democracy first, humanity first, India
is fulfilling today its duty as Vishwabandhu, or friend to the world. Whenever there is any kind of crisis in any part of the world, it has always been our honest endeavor to reach there as a first responder. आपने कोरोना का वो दौर You देखा have all been through the COVID जब pandemic, हर देश अपने अपने when बचाव में every ही country जुटा। was focused only on saving and protecting भारत ने itself. दुनिया के India 150 से shared अधिक देशों के medicines साथ and vaccines दवाएं with over और vaccines 150 share की। countries. मुझे संतोष है It is a matter of भारत great satisfaction उस मुश्किल दौर that में in that difficult time, गयाना की जनता को India भी was also मदद able to पहुंचा assist Guyana. दुनिया में जहां जहां युद्ध की स्थिति Whenever आई conflicts erupted anywhere in the भारत world, राहत और India बचाव के has लिए आगे always आया come forward to help with श्रीलंका हो relief and rescue efforts, whether मालदीव it हो is Sri Lanka or Maldives, जिन भी देशों में संकट है whichever country faced a भारत crisis, ने आगे बढ़कर India came बिना forward स्वार्थ के to offer मदद की। selfless support, नेपाल से लेकर whether it was Nepal, तुर्की और सीरिया Turkey, तक or Syria. जहां जहां भूकंप आए Wherever there was भारत devastation due to सबसे earthquakes, पहले पहुंचा India was the first one to यही reach. तो हमारे संस्कार हैं। These are our values. हम कभी भी We have never स्वार्थ के moved साथ forward आगे based नहीं on बढ़े just our हम self-interest. कभी भी We have never विस्तारवाद moved की forward भावना से आगे with an नहीं बढ़े expansionist vision. हम रिसोर्सेज We पर have कब्जे never की tried to get Resources को control of हड़पने की भावना से resources or to grab हमेशा resources. हमेशा दूर रहे हैं मैं मानता I हूँ believe स्पेस हो that whether it is space सी हो or the seas, ये यूनिवर्सल these कॉन्फ्लिक्ट should के नहीं not be zones of बल्कि conflict, यूनिवर्सल but कोऑपरेशन के rather विषय of होने चाहिए universal cooperation दुनिया के लिए भी for the world as well. ये समय कॉन्फ्लिक्ट This का नहीं is है not a time for ये conflict. समय This is a time कॉन्फ्लिक्ट पैदा to करने वाली identify कंडीशंस को and पहचानने address और उनको reasons दूर करने that give rise to conflicts. आज टेररिज्म Today, ड्रग्स there are numerous Cyber challenges like terrorism, ऐसी drugs, कितनी ही and चुनौतियां cybercrime. जिनसे मुकाबला करके It ही is only by हम overcoming them अपनी that आने we वाली will be पीढ़ियों able का to create a भविष्य better संवार future पाएंगे for the generations to come. और ये तभी संभव And है this is possible जब हम only डेमोक्रेसी when we फर्स्ट let democracy first, ह्यूमैनिटी फर्स्ट को humanity first, सेंटर स्टेज देंगे take center stage. साथियों Friends, भारत India's views प्रिंसिपल्स के are आधार पर always based on Trust principles और ट्रांसपेरेंसी के आधार पर ही and on अपनी transparency. बात की है एक भी देश Even if एक भी a रीजन single country पीछे रह or गया a single region तो is हमारे left behind, ग्लोबल गोल्स we will कभी never हासिल be नहीं हो able to पाएंगे achieve our global goals. तभी भारत कहता That है is why India says एवरी नेशन every मैटर nation matters. मैं फिर And दोहराऊंगा that is why I एवरी repeat, नेशन every मैटर्स nation matters. इसलिए And that is why भारत India thinks आइलैंड of नेशंस को island nations, स्मॉल not as आइलैंड small नेशन नहीं island nations, बल्कि but लार्ज large ओशन ocean कंट्री countries. मानता है इसी भाव के तहत हमने with this very belief
इंडियन that we ओशन laid से out जुड़े आइलैंड देशों के लिए the सागर sober प्लेटफॉर्म vision बनाया। for island nations connected to हमने the Indian पैसिफिक ओशन Ocean. के देशों को We जोड़ने have के लिए भी also created विशेष a फोरम special बनाया है। forum to connect countries of the इसी Pacific नेक Ocean. नियत से And it is with भारत these ने good intentions G20 that की during प्रेसिडेंसी के its दौरान G20 presidency, अफ्रीकन India यूनियन को fulfilled its duty by G20 admitting में शामिल the African कराकर Union into अपना the कर्तव्य G20. निभाया। साथियों, Friends, आज भारत today हर तरह से India firmly वैश्विक stands विकास के for पक्ष global में खड़ा है, development. India शांति के stands पक्ष में खड़ा for है। peace. इसी And भावना के साथ it is in this आज spirit भारत that ग्लोबल साउथ की भी today आवाज बना India has become the voice of the global भारत का south. मत है India believes कि ग्लोबल साउथ that ने the global south अतीत में in the past बहुत कुछ has भुगता। suffered way too much. हमने अतीत में In the past, अपने स्वभाव we और progressed संस्कारों के while मुताबिक protecting nature, प्रकृति as को this सुरक्षित was an रखते integral हुए part of our प्रगति करने का character प्रयास and our culture. लेकिन कई However, देशों ने several countries एनवायरमेंट को नुकसान achieved पहुंचाते हुए development by अपना विकास harming the environment. आज Today, क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी कीमत Countries of the ग्लोबल global साउथ के south देशों को are चुकानी being पड़ forced to pay the highest price for climate इस change. असंतुलन से It is absolutely दुनिया imperative को to निकालना correct this बहुत imbalance आवश्यक in the है। world. साथियों, Friends, भारत हो whether it is India गयाना हो or Guyana, हमारी भी we विकास की आकांक्षाएं also have our aspirations हमारे for development. अपने We लोगों के लिए dream of बेहतर better जीवन lives देने के for our सपने people. इसके लिए And ग्लोबल साउथ की that एक is why आवाज it is of utmost बहुत ही importance जरूरी that the है। global south speaks in one ये voice. समय This is a moment ग्लोबल साउथ के देशों of की awakening का for समय the countries of the global south. ये समय This moment हमें is presenting us एक with an opportunity दे रहा opportunity है कि to हम work एक साथ together मिलकर and एक to नया create global a order new बनाएं। world order. और मैं And in इसमें this, I गयाना see की a big role आप for सभी Guyana जनप्रतिनिधियों की and भी for all of the बहुत people's बड़ी representatives भूमिका present here today. साथियों Friends, यहाँ there अनेक are women several members women members present here. दुनिया के One फ्यूचर very big factor फ्यूचर ग्रोथ को that प्रभावित impacts करने the वाला future of the world एक and बहुत बड़ा future फैक्टर growth is women, दुनिया who की आधी make up आबादी है। half the world's population. बीती सदियों In में previous centuries, महिलाओं को women ग्लोबल ग्रोथ में did not contribute get करने enough का पूरा मौका opportunities नहीं मिल to पाया। contribute towards global growth. इसके कई And कारण there were रहे। several reasons for this. ये किसी एक And देश की this नहीं was not just the case सिर्फ in one global country south की नहीं or in बल्कि the global पूरी south. दुनिया की In कहानी। fact, this was the case all लेकिन across the world. 21st century However, in the 21st global century, prosperity women सुनिश्चित will करने में play a significant role महिलाओं की in बहुत ensuring बड़ी भूमिका global होने वाली है। prosperity. इसलिए And that is why अपनी during G20 its presidency के दौरान G20 presidency, भारत ने India women-led chose development women-led development एक बड़ा as एजेंडा an बनाया। agenda priority. साथियों, Friends, भारत in में हमने India, हर we सेक्टर में have a massive हर campaign स्तर पर to assign leadership leadership की roles भूमिका to देने के women in एक बड़ा every अभियान sector चलाया। at every level. भारत में Women हर are सेक्टर में stepping forward आज in महिलाएं आगे आ all रही हैं। sectors in India today. पूरी दुनिया में Out जितने of the pilots total हैं, number of pilots
all उनमें across से the world, सिर्फ only 5% 5% महिलाएं are हैं। women. जबकि Whereas भारत in में India, जितने out of पायलट the हैं total number of उनमें pilots, से 15% 15% are महिलाएं हैं। women. भारत में In fact, there संख्या is a large number of फाइटर पायलट्स women महिलाएं fighter pilots also in India. दुनिया के विकसित देशों में भी Even in the developed Science, countries of the world, टेक्नोलॉजी among science, Engineering, technology, engineering, and math, what यानी is known STEM as graduates में STEM. Amongst the STEM 30-35% graduates across the ही world, women हैं। only 30 to 35% are भारत women. में ये संख्या And in India, this number 40% has से भी crossed ऊपर 40%. आज In भारत के India बड़े-बड़े today, स्पेस मिशन की big कमान space missions महिला are being वैज्ञानिक led संभाल रही by हैं। women scientists. आपको ये जानकर भी You खुशी will होगी also be happy to know भारत ने that India अपनी पार्लियामेंट has also passed महिलाओं a को law रिजर्वेशन देने for का भी reservation कानून of पास seats किया। for women in its parliament. आज भारत में Today in India, डेमोक्रेटिक there गवर्नेंस के is representation by अलग-अलग लेवल्स women पर at various levels महिलाओं का of प्रतिनिधित्व democratic governance. हमारे यहाँ In India, लोकल at लेवल local पर levels, पंचायती we राज have है। what is called the Panchayati bodies Raj, हैं। which are local bodies हमारे or village पंचायती राज councils. सिस्टम में In India's Panchayati Raj system or the 14 village लाख से councils, ज्यादा यानी over 1.4 million 1.45 million elected representatives are महिलाएं women. हैं। आप कल्पना कर सकते Now, हैं you can imagine गयाना की that कुल the number आबादी of से भी women करीब-करीब who 2 मिलियन represent आबादी local में governments in हमारे India यहाँ is almost महिलाएं twice local government the को total represent कर रही हैं। population of Guyana. साथियों Friends, गयाना for us, लैटिन अमेरिका Guyana के is विशाल a महाद्वीप gateway का to the gateway। vast Latin American continent. आप भारत और You इस विशाल can महाद्वीप के become बीच a bridge of अवसरों opportunities and और possibilities संभावनाओं का between India एक and this ब्रिज बन vast सकते हैं। continent. हम एक साथ And मिलकर together, भारत और can कैरिकॉम further के improve पार्टनरशिप को the India और बेहतर CARICOM बना सकते हैं। partnership. कल ही गयाना Just में yesterday, इंडिया the कैरिकॉम India समिट का CARICOM आयोजन summit हुआ है। was held here in Guyana. हमने अपने We साझेदारी के हर decided to पहलू को further strengthen और मजबूत every करने का aspect फैसला of लिया। our partnership. साथियों, Friends, गयाना के India विकास के लिए is भी extending all possible भारत support हर for संभव Guyana's सहयोग development. दे रहा है। यहाँ के India इंफ्रास्ट्रक्चर में and निवेश हो, Guyana are working यहाँ together की to कैपेसिटी बिल्डिंग ensure में निवेश हो, that there is investment here भारत और in गयाना infrastructure and that there is मिलकर काम investment कर here in capacity building. भारत द्वारा दी गई The ferry ferry हो, provided by aircraft India, the ये आज aircraft provided by गयाना India के बहुत are today काम आ रहे हैं। proving to be very useful for Renewable Guyana. energy के सेक्टर India is also Solar power providing के क्षेत्र में भी extensive help भारत बड़ी मदद कर रहा है। to Guyana. आपने T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का The T20 World Cup event hosted by you was spectacular. भारत को खुशी है India is happy to स्टेडियम के have निर्माण में assisted in हम the भी सहयोग construction दे पाए। of this साथियों, stadium. डेवलपमेंट से जुड़ी साथियों Friends, डेवलपमेंट our से जुड़ी हमारी development ये related पार्टनरशिप partnership हम is नए now दौर में प्रवेश entering a new era. भारत की एनर्जी Demand डिमांड for energy तेजी से is बढ़ रही growing है rapidly in India, और भारत and India अपने is सोर्सेज also को diversifying its डाइवर्सिफाई भी energy कर रहा है। sources. इसमें In this regard, गयाना को हम we एक view Guyana as महत्वपूर्ण an important एनर्जी energy सोर्स के रूप में source. देख रहे हैं।
हमारे बिजनेसेस We are also गयाना में making और अधिक continuous इन्वेस्ट करें, efforts to ensure इसके लिए भी that our हम businesses निरंतर invest प्रयास कर more रहे हैं। in Guyana. साथियों, Friends, आप सभी all of you ये भी are जानते also हैं aware भारत that के India पास एक has बहुत बड़ी huge youth capital. यूथ कैपिटल भारत में India क्वालिटी has एजुकेशन a quality और स्किल education डेवलपमेंट and skill इकोसिस्टम development ecosystem. भारत को India गयाना will के be happy ज्यादा to से host ज्यादा as स्टूडेंट्स many को students as possible होस्ट करने from में Guyana. खुशी होगी। मैं आज Today, गयाना के सांसद through के the माध्यम से Parliament of Guyana, गयाना के I युवाओं also invite the youth भारतीय इनोवेटर्स of और Guyana वैज्ञानिकों के to साथ work मिलकर together with काम Indian करने के लिए innovators भी and आमंत्रित करता हूं। scientists. कोलैबोरेट Collaborate ग्लोबली globally एंड and act एक्ट locally. लोकली। हम अपने युवाओं को This is इसके the लिए इंस्पायर कर inspiration सकते we हैं। can give to our youth. हम क्रिएटिव Through कोलैबोरेशन के creative जरिए collaboration, we ग्लोबल can find चैलेंजेस के सॉल्यूशन solutions ढूंढ सकते to हैं। global challenges. साथियों, Friends, गयाना के as महान the सपूत great son of Guyana, श्री Sri छेदी Chedi जगन ने कहा Jagan था once said, कि हमें lessons from अतीत the से past सबक लेते हुए अपना must वर्तमान serve as a सुधारना guide होगा for the present और and help भविष्य की create मजबूत a नींव strong तैयार करनी foundation होगी। for the future. हम दोनों देशों का The साझा shared अतीत, past of both our countries, हमारे सबक, the lessons that we have हमारा learned, वर्तमान our present, हमें जरूर will उज्जवल undoubtedly भविष्य की तरफ lead us ले towards जाएंगे। a bright future. इन्हीं शब्दों के साथ I आप सबके conclude बीच आने का with these words. सौभाग्य मिला। इसके लिए I मैं आप सबका आभार व्यक्त thank you करते हुए that अपनी you बात gave me the समाप्त करता opportunity हूँ। to be amongst मैं you आप today. सभी को I भारत आने के लिए invite भी all of you निमंत्रित to करूंगा। visit India. मुझे गयाना के I ज्यादा से ज्यादा would be pleased to जनप्रतिनिधियों welcome का as many members of भारत में Parliament स्वागत as करते possible हुए from खुशी Guyana होगी। to India. मैं एक बार Once फिर again, गयाना I would की like संसद to का express my आप सभी deepest जनप्रतिनिधियों gratitude का to Guyana's बहुत Parliament and बहुत to आभार all the व्यक्त people's करता हूँ। representatives present बहुत here. बहुत Thank धन्यवाद। you, thank you, thank you very much. Honorable members, yes. Honorable members, ladies and gentlemen, on your behalf, I extend our heartiest and grateful thanks to His Excellency Prime Minister Modi for that very inspirational and visionary address to our National Assembly. The things that matter to the world today on the front burner, he touched. Democracy, humanity, the environment, energy security, women and youth. And these are all issues which every nation today has to address as a priority. But for me, there are two things which stand out in his address.
First, we always look at islands. In the Caribbean you go, you hear people say, from the islands. Today I learned a new term. These are not islands, but these are ocean countries. The water area of these countries far exceed the landmass. And that is what I say is visionary. And then Prime Minister Modi said that India is Vishnu Bandhu, friend to the world. Prime Minister, thank you very much, and thank you for all the commitments you have made, not only to Guyana, but also to the entire Caribbean and the Global South. We in Guyana appreciate all of the work you have done, not only for Guyana, but for everyone around the world. Even our clerk spent over 9 months in India in training when he was preparing for this job. And there is something very, very common between the two of us. On May 26, Guyana became independent. Prime Minister Modi took his oath of office for the first time on May 26. So thank you very, very much. One bit of housekeeping. When we adjourn, we ask that you remain seated to allow the members of Parliament to come outside where we will have a group picture with His Excellency Prime Minister Modi. Honorable Prime Minister. Honourable members, the House stands adjourned to Monday, the 25th of November at 2 p.m. We are a peaceful people, struggle is we struggle, and we don't look for trouble, just ask around. But when outside faces from foreign places talk about taking over, we ain't backing down. We ain't giving up no mountains, we ain't giving up no tree, we ain't giving